seats. Good afternoon, everyone, and good afternoon to all those who have joined us online. So, friends, we are left with the last two units of economic survey. The 11th chapter deals with the external sector, whereas the final chapter deals with infrastructure, physical and digital infrastructure. Now, see, if there is a question from the last chapter, it would be more with respect to a scheme. Like, say, for example, National Investment Policy Pipeline or National Monetization Pipeline, something like that, or Vande Bharat. So, what we will do is we will quickly cover these two chapters and then we will give a lot of time in understanding the union budget, because that will have a lot of impact as far as the examination is concerned, right? So, now we will start with chapter number 11. Then we'll move to chapter number 12. After that, I'll give you a break. And after the break, as we reassemble, we'll talk about the union budget, right? And this year's budget is a very exam important budget, because there are so many terms that have been introduced in the budget, which is very crucial for the examination. So without further ado, let's get started and let's pick chapter number 11. So this is our final slide with, again, these two chapters, they run into almost like, I think 60, 65 odd pages, but I've summarized all of this in 8 to 9 pages. So that would be enough. You just read through that and that would be sufficient. So look here, the chapter is entitled as External Sector, Watchful and Hopeful. It means that we are also having an eye on what is the global scenario right now, and we are also hoping that things will improve. So you look here, India's external sector has been affected by shocks and uncertainty, mainly in terms of elevated global commodity prices. Why? Because of the Russia-Ukraine conflict and the supply chain disruption brought in by the COVID-19. Tightening international financial conditions. What does that mean? Quantitative tightening in advanced economies, right? Heightening financial market volatility. It means what? The withdrawal of FPI money, portfolio money. Why? Because of monetary tightening in advanced economies, especially by the United States Federal Reserve. Then reversal of capital flows. Obviously, you can understand that's a natural concomitant to that. Currency depreciation. Obviously, when dollars will go out of the system, the local currency will depreciate. Subdued global growth and trade slowdown. Why subdued global growth? Because all the advanced economies, central banks, they started adopting tightening policies, or they started increasing the interest rate. That's why this was a disincentive to global growth. Further, there was the oil crisis, gas crisis because of the Russia-Ukraine conflict and China's zero COVID policy. So see, if there is a question from this statement itself, the questions could be, which of the following can impact external or balance of payment or something like that? Do you understand that? Or external scenario or external sector, something like that. However, India has been able to face the headwinds. You remember the word headwinds? Headwinds means the adverse economic conditions. That is headwinds. Due to its strong macroeconomic fundamentals and buffers. What is macroeconomic fundamentals? It means three important things: growth, inflation and fiscal deficit, all under control. And what do you mean by buffer? Buffer means emergencies funds that have been created, or emergency reserves that have been created. Like, so for example, one important buffer that India has is India's forex reserves. Do you understand that? Like, we can have oil buffers. We created oil buffers because we purchased easy oil from Russia. So look here, the share of India's trade as a percentage of world GDP has been steadily increasing. During financial year 23, India's exports have displayed resilience on the back of record levels of exports in financial year 22. In fact, I'll give you a thumb rule. Every next year is a record year, unless there is a great supply chain disruption like the COVID-19 pandemic. Petroleum products, gems and jewelry, organic and inorganic chemicals, drugs and pharmaceuticals were among the leading export items. Now look here, India imports a lot of oil and gold. We are obsessed with gold and we import a lot of gold. That's why, see, government has come up with gold monetization scheme. Are you aware about that? Good. What do you understand by this term monetization?
Monetization means turning an asset into an income source. That is monetization with the usage of money. That is monetization. Now, trade helping India reap the benefits of globalized world. In the present globalized and integrated world, trade is essential for developing countries to reap the benefit of increased globalization of products and financial markets. Now, you see, we have two kinds of market. One market is the product market. It means the goods and services market. And the second market is financial market. Like, say, for example, the stock exchange is a financial market. Now, trade, if we can encourage trade, it means inflow and outflow in these two markets, then we will help the country grow economically. Like, say, for example, when people bring in money into Indian stock market, Indian stock prices, they jump up, and that creates business sentiments. Do you understand that? And do you remember one term, animal spirits? So animal spirits are pushed up when the product and the financial markets, they show buoyancy. Write down the statement. Animal spirits rise in an economy. Animal spirits rise in an economy when trade is promoted. When trade is promoted, along with infrastructure development, put a bracket and write two-way flow of goods, services, investment and labor. Two-way flow of goods, services, investments and labor. देखो, the ratio stands at 46% in 2021 and 50% for half yearly 2022. And what is this? India's share of trade as percentage of GDP. Nearly, if you look at the world trade, share of world GDP is 50 to 60%. It remains almost in that range. Now look at India's trade as share of India's GDP. Now that's also a good indicator. It has been constantly above 40% since 2005, but the ratio now stands at 46% in 2021 and half yearly of 2022, it was 50%. In 2023, we are expecting it to rise further, and 2024, obviously further, and the budget projects that. Global scenario, let's take a look at that. Global trade outlook turned grimmer in the second half of 2022 on the back of confluence of adverse factors like. Now, I have highlighted these as points, and these could be the statements in the examination, right? The increasing likelihood of a recession in major economies. Why? Recession in major economies? Why? Because of hike in interest rates. Remember? Because when you increase the interest rates, you slow down growth. And when you slow down growth constantly, then obviously you inject recessionary tendencies or sentiments in the economy. Then tapering demand for consumer durables. Tapering means reducing. A tapered end is like a narrow end. Do you understand that? So tapering demand for consumer durables. I told you that when inflation occurs, inflation hits hard the poor people. And poor people want to spend now on necessities and not on luxuries. And mostly inflation that developing economies face is retail inflation and food inflation. Do you understand that? And that's why consumer durables, they start facing some sort of slowdown. And that is because of fall in demand in, say, luxury items. Think about cars or television, smartphone, etc. People will first focus on food, then on these items, right? So that's what it is being highlighted here. Tapering demand, it means reduction in demand for consumer durables. Got it? Aggressive monetary policy tightening by several central banks, obviously led by the US Fed Reserve. Continued supply chain disruptions, first by pandemic, then by zero COVID policy, and then by the Russia-Ukraine crisis, and elevated freight charges. Freight charges means the logistics cost. The logistics costs have also increased. Why? Because of the supply chain disruptions. So there could be a question, which of this can hurt global trade? Do you understand that? Or which of this can create an adverse balance of payment situation? And these could be just the statements. Do you understand that? So just keep an eye on that. Now, the United Nations Conference on Trade and Development
in its global trade update of December 2022 has also noted that the ongoing trade slowdown is expected to worsen for 2023. Why it is expected to worsen for 2023? Because of China's obsession with its zero COVID policy and the Russia-Ukraine thing further aggravating, because there are no signs of withdrawal from that battle point, right? So that's why there is still a kind of problem going on. Bright spots in India's trade performance. ये आप एक बार देख लो. These are just simple statements. Significant strides in exports were registered in drugs and pharmaceutical, electronic goods, engineering goods, and organic and inorganic chemicals in financial year 2022. Remember, the items of main import and items of main export. We export mostly services and primary articles. Manufactured goods का export उतना ज़्यादा है नहीं हमारे, ठीक है. और जो हमारा import है mostly वो क्या है? Oil है, gems and jewelry है, और कुछ important chemicals हैं which are required for the pharmaceutical industry. Gems and jewelry also, we have a flourishing diamond industry, say for example. So do we produce diamond here in India? Do we have mines? Very limited, right? Not like in South Africa or Australia or something like that. So we import a lot. India has also been seeing consistent growth in exports of electronic goods. Now that's a good sign, because electronic goods, if we see an increase in their export, it means what? It means that manufacturing is getting a fillip in the country. India achieved an all-time high annual merchandise export of 422 billion US dollars in financial year 22. But the point here to be noted is still we have a balance of trade deficit, right? India's services exports stood at US dollar 254.5 billion in financial year 22, recording a growth of 23.5% over financial year 21. India is the 7th largest service exporter in the world. Keep this thing in mind, right? And in our invisibles, the biggest component is IT and communication related services export. Software and business services together constitute more than 60% of India's total services export. लिखा भी हुआ है यहाँ पे. Now, let's take a look at this foreign trade policy. अच्छा देखो, foreign trade policy जो है 5 साल के लिए रिलीज होती है हमेशा. तो 2015 में जो रिलीज हुई थी वो खत्म होना था 2020 में. But 2020 was the corona year. That's why it was extended to 2022. Then it was again extended till March 2023. ठीक है. अब next trade policy जो है वो आने वाली है. The focus of the foreign trade policy has been to provide a framework of rules and procedures for exports and imports and a set of incentives for promoting export. Foreign trade policy में mostly दो चीजें होती है. On one side, it gives how exports and imports will be conducted. And second, it tells that how we can promote our exports by diversifying our export basket and by searching for new markets. दोनों चीज. Due to the pandemic period, the 5-year FTP 2015-20 was extended from 2020 to 2022. The policy has been further extended till March 2023. मैंने आपको बता दिया. The Export Preparedness Index prepared by Niti Aayog. ये आप ध्यान में रखना, right? There could be a simple question like Export Preparedness Index is prepared by, और उसमें Ministry of Statistics and Program Implementation या Indian Statistical Organization, Niti Aayog, Prime Minister's Office, ऐसा कुछ भी हो सकता है. तो अब ध्यान रखना, नीति आयोग जितने भी इंडेक्स हैं, बट देन अगेन रटना मत, मोस्टली जितने इंडेक्स हैं वो सब कौन बना रहा है? नीति आयोग. ठीक है. Has also been introduced to evaluate states' potential and capacities. In the year 2022, India signed free trade agreements with UAE and Australia. Now, this is beyond the ken of the survey, but read about SEPA, SECA. Are you aware about Comprehensive Economic Partnership Agreement, Free Trade Agreement, PTA, Preferential Trade Agreement? इन सब का फर्क क्या है? ये आप ध्यान दे रहे हैं ना? This is basic economics, right? So go through it. International trade settlement in Indian rupees. Now that's a leap jump, right? We want international trade to be conducted in Indian rupees because dollars are valuable to us, because we cannot print dollars, we have to earn dollars, but we can print always rupee. In 2022, the Reserve Bank of India issued a circular permitting an additional arrangement of invoicing, payment and settlement of exports, imports in Indian rupees or INR. It is an important step to promote INR as an international currency / hard currency. Do you understand that? With global acceptance. Now, the moment this happens, that is the day when India becomes superpower.
You understand that? India will not become superpower by only developing nuclear weapons or by developing a strong military. Yes, these things are necessary. But India will become a superpower or a global power only when other countries start dealing with Indian rupee. It shows the confidence of other economies in Indian economy. आज कोई भी डॉलर लेने को क्यों तैयार है? क्योंकि सबको ये लगता है कि सब पूरी दुनिया फेल हो जाएगी, यूएस नहीं फेल होगा. Do you understand that? And you know that यूएस को हमेशा यूएस जो है बहुत अच्छे से मार्केट करता है अपने आप को. ठीक है? Like one great example would be Hollywood. If you see, Hollywood movies are like that. Whenever there is a global problem, the US Army comes in. एलियन से लड़ाई हो रही है, यूएस आर्मी बचा रही है. बाकी आप देख लो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, इधर उधर क्या हो रहा है, असलियत क्या है और दिखाते क्या है. द पॉइंट यही है कि सब कुछ परसेप्शन पे चलता है. देखो दो तरीके के लोग होते हैं. एक वो होते हैं जो पढ़कर इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं पर भी, मतलब दे हैव अ रिसर्च एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिसर्च दे डू इन्वेस्टमेंट इन लाइफ. इट कुड बी इन फाइनेंशियल मार्केट और इवन इन लाइफ. एंड अदर्स आर दोज हु डू इट ऑन देयर गट फीलिंग. Speculation. Do you understand that? So the speculators are fence sitters. क्योंकि जो रिसर्च कर रहा है वो तो रिसर्च करके ही जाएगा, पर जो स्पेक्यूलेटर है अगर आप पकड़ लो तो आप कहीं पे भी आगे जा सकते हो. बीट इन पॉलिटिक्स, बिकॉज देखो पॉलिटिक्स में भी अगर हमारे यहाँ 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्टीज हैं तो उनका तो एक बेस तो है कि दे आर आर्डेंट सपोर्टर्स ऑफ दिस पार्टी इवन एट स्टेट लेवल. बट देन देयर आर फेंस सिटर्स कि वो उनको नहीं समझ में आता, कभी वो इसको वोट करते कभी वो उसको वोट करते. तो जो इलेक्शन कैंपेन पूरा होता है वो फेंस सिटर्स के लिए होता है. समझ में आया? क्योंकि जिसने तो मतलब पूरे जनरेशन टू जनरेशन एक ही पार्टी को वोट कर रहे हैं वो तो सोचते भी नहीं है. ऐसे ही होता है ना जनरली. सो दैट इज ऑल अबाउट द वर्ल्ड सिनेरियो कि अगर एक बार इंडियन रुपी एक्सेप्ट हो गया तो फिर देखो, फिर जिसे कहते हैं ना बल्ले बल्ले हो जाएगी इंडिया की. इट विल रिड्यूस द नेट डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, द यूएस डॉलर इन पर्टिकुलर फॉर द सेटलमेंट ऑफ करंट अकाउंट रिलेटेड ट्रेड फ्लोज. तो एक बार अगर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाए यूएस डॉलर पे तो यूएस जो हमको बात बात पे आंखें दिखाता है वो भी खत्म हो जाएगी. लाइक से फॉर एग्जांपल व्हेन वी वर परचेजिंग ऑयल फ्रॉम रशिया, डिड यू सी हाउ मिस्टर एस जयशंकर वाज अटैक्ड बाय द यूरोपियन मीडिया व्हेन ही वाज इन यूरोप? Then he said that when will Europe stop imagining that Europe's problems are world's problems? When India faced so many problems, where were you? When we were facing terrorism, there was no response from you. कुछ यूरोपियन कंट्रीज में तो वो आप देख सकते हो खालिस्तानी मूवमेंट को भी एक तरीके से शेल्टर ही मिल रहा है. They are not taking action. Like say what happened before the UK High Commission? We all know. Indian High Commission at UK. As per the Bureau of International Standards Triennial Central Bank Survey 2022, the US dollar is the dominant vehicle currency accounting for 88% of global forex turnover. मतलब आप समझ सकते हो इसलिए यूएस क्यों सुपर पावर है, बिकॉज ऑफ द डॉलर. द INR अकाउंटेड फॉर 1.6%. बट अगर ये 5% भी हो गया तो आप समझ लो कि इंडिया का जो एक परसेप्शन है वो चेंज होने लगेगा धीरे धीरे, और सारा परसेप्शन का ही खेल है. इनिशिएटिव टू एनहांस ट्रेड, अब ये देख लो, इस पे पूरे क्वेश्चंस आ सकते हैं सीधे सीधे रिलेटेड. फोकस ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, प्रोएक्टिव सपोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसीज इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, प्लांटेशन बोर्ड एंड एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपिडा. नाउ द क्वेश्चन कुड बी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज can help in improving exports, agricultural exports or something like that. Export facilitating measures like online issuance of certificates required for export. Now, exporters require an export certificate. Are you aware also there is a bank called Exim Bank, Export Import Bank, which provides export credit, import credit, etc. Interest equalization scheme. This scheme was formulated to give benefit in the interest rates being charged by the banks to the exporters on their pre and post shipment rupee export credits. मतलब वही जो बैंक जो देती है Exim Bank, उस पे subvention interest पे. Remission of duties and taxes on exported products scheme. It seeks remission of central, state and local duties, taxes, levies at different stages at central, state and local level. नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें. एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी. द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ECGC supports Indian exporters and banks by providing export credit insurance services. Now, the point you know that if you can insure your export, then obviously it reduces risks, and when it reduces risks, it improves sentiments. Do you understand that? Also, there is a flourishing insurance market.
which grows with it. और एक चीज देखो, insurance companies, they have to pay compensation whenever there is a mishap, but mishaps are very rare. They are not a daily event, but premiums are a regular thing. So that's why insurance penetration, pension penetration, ये दोनों बहुत important factors है for financial inclusion. ये line लिख लो कहीं पर. Insurance penetration and pension penetration are vital for financial inclusion. Insurance penetration and pension penetration is vital for financial inclusion. अब ये स्कीम तो पुरानी है, but still, for the sake of completeness, let's look at that. Krishi Udan scheme launched in August 2020 on international and national routes to assist farmers in transporting agricultural products so that it improves their value realization. Trade infrastructure for export scheme. The scheme provides financial assistance in the form of grant in aid to central state government owned agencies for setting up of upgradation of export infrastructure as per the guidelines of the scheme. Export infrastructure like, for example, warehouses or port facilities or connectivity, all those kind of things. This could be greenfield or brownfield. मतलब greenfield मतलब नया project, brownfield मतलब already existing project, उसका upgradation होगा. Districts as export hubs. Are you aware about the aspirational district program? उस पे भी वो एक product vocal for local, पता है ना आपको वो? Yes. The district as export hubs, one district, one product initiative is aimed at targeting export promotion, manufacturing and employment generation at the grassroots level. तो देखो, अब अगर इससे क्वेश्चन भी आता है तो एकदम बेसिक क्वेश्चन आएगा, like which of the following factors will impact exports, or which of these following factors will impact balance of payment, or a positive trade scenario will have which of the following consequences. Do you understand that? Like say, for example, it will improve animal spirits in the economy. Second, it will help in employment generation. Third, it will strengthen the local currency vis-a-vis the standard currency. Something like that. Do you understand that? तो ऐसे questions आने वाले हैं, बिल्कुल आपकी basics के through हो जाएंगे. Balance of payments in challenging time. For the period April-September 2022, India recorded a current account deficit of 3.3% of GDP. हमारा current account deficit ज़्यादा है GDP के percentage wise में या fiscal deficit? कौन सा ज़्यादा है in terms of percentage with respect to GDP? क्या ज़्यादा है, fiscal deficit या current account deficit? Fiscal deficit ज़्यादा है, ठीक है, वो 6% के आसपास कुछ था. This is on the back of increase in the merchandise trade deficit as compared with 0.2% in half yearly of financial year 2022. India's CAD is modest and within manageable limits. ये सबसे बड़ी बात है. हमारे पास जो forex reserves है वो हमको 9.3 months का import cover देता है. मतलब अगर हम अभी काम करना बंद कर दे, पूरी कंट्री बैठ जाए, छुट्टी मना ले 9.5 महीने तक, तब भी हम जिंदा रहेंगे. ठीक है. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो है 3 महीने का, कि 3 months का कवर होना चाहिए आपके पास. हमारे पास 9.3 months का है. Pakistan had only say 1 month, something like that. That's why there is a crisis. And Sri Lanka ran out of that time also. That's why it went into crisis. Net services receipts have increased primarily on account of robust computer and business services receipts. Net services exports and net private transfers, mainly remittances, contributed to the surplus on the invisible account, which cushioned the merchandise trade deficit. In fact, services में तो हमारा इतना हो जाता है and capital account से कि हम अपना deficit भी कर देते हैं bridge, और हमारे पास surplus भी होता है जिससे forex भी हमारा बढ़ जाता है every time. That's why our forex is continuously increasing. FDI and FPI is the largest component of capital account. और यही ऑर्डर है एफडीआई का कंट्री में आने का, याद रखना. सिंगापुर से सबसे ज्यादा आता है 37% के आसपास, मॉरिशस, देन यूएई, देन यूएसए. दे आर द मेजर एफडीआई सोर्स कंट्रीज फॉर इंडिया. सबसे ज्यादा एफडीआई इंडिया में सिंगापुर, याद रखना. पहले मॉरिशस हुआ करता था बट अब सिंगापुर हो गया. External commercial borrowings to India recorded net outflows of half yearly financial 23 as against net inflows a year ago. External commercial borrowings means, can private companies borrow from foreign entities? Yes, that is external commercial borrowing. तो external commercial borrowing में जो था इस बार net outflow है, मतलब ज्यादा गया है. तो यहां से लोगों ने लोन दिया है बाहर, समझ में आ रहा है, बजाय जितना लिया हो.
External commercial borrowings could be net external commercial borrowings means loans taken in foreign currency by Indians from outside market, adjusted with loans given by Indians in foreign currency to foreign borrowers in Indian markets. You understand that? आ रहा है ये external commercial borrowing का net है. The reserves augmented to US dollar 562.7 billion as of December 2022, covering 9.3 months of imports. As of November 2022, India was the 6th largest foreign exchange reserves holder in the world according to IMF. कौन है सबसे ज्यादा किसके पास रिजर्व्स? चाइना, फॉलोड बाय यूएस. होगा क्या? सोच के देखो, लॉजिक लगाओ. यूएस हो सकता है, यूएस हो सकता है क्या? नहीं, कुछ तो होगा, वो भी रखा होगा अपने रिजर्व. क्यों नहीं रखेगा रिजर्व? बैंक्स अपने पास रखते हैं ना एसएलआर इंडियन रुपी में. फेडरल रिजर्व भी रखती होगी कुछ पैसा अपने पास डॉलर बचाकर, जिसको वो कभी भी चाहे तो पुश कर दे, क्योंकि प्रिंटिंग ऑलवेज हैज टू बी अंडर लीगल सैंक्शन. बताओ सबसे ज्यादा रिजर्व किसके पास है? चाइना. उसके बाद किसके पास होगा? जापान. जापान के पास है. उसके बाद आफ्टर दैट आई थिंक स्विट्जरलैंड, फिर उसके बाद है रशिया, फिर ताइवान, फिर इंडिया. ये है, ठीक है. तो इंडिया इज 6th लार्जेस्ट. देखो, एडिक्वेसी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इसके 3 अप्रोच है. एक कन्वेंशनल अप्रोच है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, और एक आईएमएफ का रूल है, व्हिच वाज गिवन बाय क्यूटोटी ग्रीनस्पैन. दे आर 2 इकोनॉमिस्ट्स. नाउ लुक हियर, conventional approach says it uses 3 measures: ratios of reserves to imports, मतलब रिजर्व कितना है और इंपोर्ट का टोटल बिल कितना है, उसका रेशियो क्या है. To monetary aggregates, it means reserves to monetary aggregates, M0, M1, M2, remember, total liquidity situation. And measures of external debt. External debt means all the debt that India owes to outside entities. Do you understand that? Traditional approach क्या है? This simple rule of thumb is 3 months of imports or full cover of short-term debt. Short-term debt means which matures up to 1 year or less than 1 year. Now, IMF rule says, it states that a country's reserve should equal short-term external debt 1 year or less maturity, suggesting a ratio of reserves to short-term debt of 1. इसका मतलब 1 होना चाहिए रेशियो. दोनों बराबर भी होगा तो भी ठीक है, मतलब सिनेरियो आपके कंट्रोल में. इससे बाहर चला गया, then scenario becomes adverse for you. Exchange rates moving in tandem with global developments. The exchange rate of Indian rupee is market determined, as RBI's intervention in the foreign exchange market is mainly to contain instances of excessive volatility. Now, you know, there are 3 kinds of exchange rates. One is the pegged exchange rate, then there is the floating exchange rate, and then there is the managed exchange rate, right? So India is mostly floating, but the RBI intervenes whenever there is an adverse condition. Like, say, for example, the rupee is depreciating every hour, then RBI will jump into the market and it will sell dollars, or it will absorb rupees. कुछ भी कर सकते हो, बस depreciation रोकना है. तो ऐसा हो सकता है क्या? Suppose I am giving you a statement. If there is rupee depreciation or free fall of the Indian rupee, then RBI will. बहुत सारे ऑप्शन है, तो उसमें एक ऑप्शन ये है. आप मुझे बताओ ये सही है या गलत है. RBI will sell securities to the banks. RBI will conduct open market operations. ठीक है. RBI will put moratorium on credit outlays by banks. Moratorium मतलब temporary ban, कि आप लोन नहीं दे सकते. कर सकते हैं ना? तो ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बस थोड़ा आपको लॉजिक लगाना है, बाकी उस पर मत जाना ये इतना डॉलर है वो उतना डॉलर है, कोई नहीं पूछने वाला. Depreciation in 2022, the INR has depreciated by 10.8%, whereas US dollar has appreciated by 6.4%. Obviously, एक depreciate होगा तो दूसरा तो appreciate होगा ही. The nominal effective exchange rate of India depreciated by 4.8% in 2022. What is near or nominal effective exchange rate? It's a basket of currency and how Indian currency INR moves with respect to that basket of currency. When I say real effective exchange rate, then I also take into account the purchasing power of all the currencies. Do you understand that?
इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन, नाउ इट्स अ स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट. इसमें होता क्या है देखो, फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी दैट आर क्लेम्स ऑन नॉन रेसिडेंट्स एंड गोल्ड बुलियन हेल्ड एज रिजर्व्स एसेट्स. इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो. फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी. व्हाट आर फाइनेंशियल एसेट्स? loans. Loans are assets, whereas deposits are liabilities. So financial assets of residents मतलब जो इस बॉर्डर में है, इकोनॉमिक बॉर्डर में है और अपना ऑपरेशन कर रहे. रेसिडेंट इज नॉट इक्वल टू सिटीजन. A foreign entity also having economic interest and settled in India could be a economic resident of India. Do you understand that? So financial assets मतलब जो लोन दिए थे रेसिडेंट्स ने, that are claims on non-residents मतलब बाहर के लोगों ने जो लोन लिए हैं हमसे. Do you understand that? And gold bullion held as reserve assets. It means हमारे forex reserve में जितना gold है, because gold is also a part of the, are you aware? SDR, gold, they are also part of the forex reserves. Liabilities of residents of an economy to non-residents मतलब जो हमने लोन दिए हैं और जो लोन लिए हैं दोनों का जो बैलेंस है वो बैलेंस क्या है? इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन. क्योंकि जो हमने लोन लिया होगा या जो लोन बाहर के लोगों को दिया होगा वो दोनों किस में होगा? यूएस डॉलर. Do you understand that? And adjusted obviously with respect to gold that we are holding in the assets. So keep this in mind. किस पे क्वेश्चन हो सकता है? इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन deals with, like the options could be, it is the balance of export and import, that is not international investment position. It is the net balance of FDI that flows into a country, that is also not the situation. It is financial assets and liability. ये ध्यान में रखना. ठीक. एक्सटर्नल डेट सिचुएशन, ये तो हमने देख ही लिया था एक पिछले लेक्चर में, बट स्टिल लेट्स रिवाइज दैट. एक्सटर्नल डेट एज अ रेशियो ऑफ जीडीपी फेल टू 19.2% as of end September 2022 from 20.3% a year ago. About 97% of short-term debt is in the form of trade credit to finance imports. Hence, the rise in short-term debt is stability friendly. डेट क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ट्रेड क्रेडिट दे रहे हैं. क्यों? क्योंकि ऑयल इंपोर्ट्स बहुत हैवी हो गए थे. Till we got that Russia deal, right? We cracked the Russia deal, and that is in fact the biggest feather in the cap of Mr. S. Jaishankar. कि उन्होंने वो रशिया से वो तेल लेकर आ गए. बिल्कुल. Major part of India's external debt is denominated in the US dollar, followed by Indian rupee. ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि external debt अगर हमारा रुपी में हो जाए तो फिर क्या मतलब मतलब हमारी टेंशन गायब हो जाती है पूरी डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन वाले पूरे सिनेरियो से. सॉवरेन एक्सटर्नल डेट अमाउंटेड टू यूएस डॉलर 124.5 बिलियन, डिक्रीजिंग बाय 5.7% ओवर अ लेवल अ ईयर अगो. बट इसमें याद रखने लायक क्या था जो मैंने आपको बताया था? इंडियाज डेट इज मोस्टली एक्सटर्नल और इंटरनल? इंटरनल, मोस्टली इंटरनल. इट इज मोस्टली इन डॉलर और रूपी? रूपी. इट इज मोस्टली शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म इज बैड, इट्स मोस्टली लॉन्ग टर्म. ये 3 चीजें याद रखना. ठीक है. दैट इज इट, दैट वाज द चैप्टर. अब देखो ये इसमें अगर आप सर्वे में देखोगे तो हर सेक्टर का उसने दिया है. जैसे इस सेक्टर में कितना ट्रेड हुआ है, अपैरल कितना एक्सपोर्ट हुआ है, कितना इंपोर्ट हुआ है, यूएस डॉलर 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 वैल्यू. बस वो क्या करोगे पढ़ के? कुछ नहीं आने वाला उससे. ठीक है. तो जस्ट ये 4 पेज पढ़ो. चांसेस है कि स्कीम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए या कोई टेक्निकल क्वेश्चन आ जाए. देखो एक्सटर्नल सेक्टर से एक ही क्वेश्चन आएगा ना, या तो यहां से आएगा नहीं तो बेसिक्स से आएगा. ठीक है. नाउ दिस वन इज इंपॉर्टेंट. दिस चैप्टर आई फील you can expect a lot of questions from this chapter. Physical and digital infrastructure lifting potential growth. Why? Because this part of physical and digital infrastructure formation is part of what? Capex. Remember? Capital expenditure. Investing in high quality infrastructure is crucial for accelerating economic growth and sustaining it in the long run. इसको समझने में कोई दिक्कत है? Obviously, infrastructure is necessary for growth and for sustaining growth. Infrastructure development has a positive effect on. अब इससे देखो क्वेश्चन आ सकता है. Infrastructure development has a positive effect on A, B, C, D. ऐसा आ सकता है. Productivity and efficiency of Indian manufacturing firms. Yes. Poverty reduction. Yes, because infrastructure development means a lot of employment in the construction sector. Promotes both rural and agricultural development. Remember ribbon based development due to infrastructure. वो सारी चीजें होंगी. तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हैं और बहुत ज्यादा चांसेस है कि फिर से आ जाए. बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड और एक्सटर्नल सेक्टर रिलेटेड ये क्वेश्चंस हर साल करीब करीब आते ही हैं.
During the times of pandemic and geopolitical crisis, the government kept its focus on reforms in areas of physical, digital, and regulatory infrastructure. In order to increase the private sector participation in creation of new infrastructure and development of existing ones, the government took initiatives like public-private partnership, national infrastructure pipeline, national monetization scheme. इसके अलावा दो चीजें और हुई है, गति शक्ति एंड नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी. तो ये पूरा यूनिट जो है ये 5 चीजें हैं. ठीक है, इन 5 चीजों पे आप ध्यान रखो, बस क्वेश्चन यहीं से आने वाला है. अब हाँ, डिस्क्लेमर चल रहा है मेरे नीचे, चांसेस सबसे ज्यादा हैं. Government's vision and approach to infrastructure development in India. Public-private partnership. PPPs are vital instruments for governments in channeling the strength of private sector in critical areas of infrastructure. Public-private partnership appraisal committee is the apex body, ये ध्यान रखना, for appraisal of PPP projects in the central sector. PPPAC is the apex body. It has streamlined appraisal mechanisms to ensure speedy and standardized appraisal of projects. Are you aware about something called viability gap funding? What is viability gap funding? Like suppose you are installing an economic operation, या आप एक फैक्ट्री लगा रहे हो, समझ लो, ठीक है. उस फैक्ट्री को लगाने के लिए आपको 100 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन आपके पास है 20 करोड़. It means the project is unviable for you. If you get a funding of 80 crores, the project becomes viable. तो ये गैप की जो फंडिंग है, इसी को कहते हैं viability gap funding. ठीक है, to make any economic project viable. Launched by Department of Economic Affairs. ये कौन सा डिपार्टमेंट है? वही वाला जो इकोनॉमिक सर्वे. ठीक है. Under this scheme, economic sector projects may get up to 40% of capex as VGF grant. मतलब जो भी वो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसका 40% तक मिल सकता है through VGF grant. It means viability gap funding. The scheme includes higher provisions of VGF grant for social sector. If you are working on some social, like say hospital बना रहे हो, तो उसका social implication भी है economic के साथ साथ. India Infrastructure Project Development Fund Scheme, IIPDF 2022. It aims to develop quality PPP projects by providing necessary funding support to the project sponsoring authorities. It will be implemented by financial year 23 to 25. Now, National Infrastructure Pipeline इससे और monetization pipeline दोनों से बहुत ज़्यादा chances हैं question आने के, so don't miss these two. NIP has a forward-looking approach with a project infrastructure investment of around 111 lakh crore during financial year 20 to 25 to provide high-quality infrastructure across the country. It includes greenfield and brownfield infrastructure projects. So सबसे पहली बात जो ध्यान में रखना है that its time period is 2025. Second, quality infrastructure both in greenfield as well as in brownfield. तो नए ही नहीं, old भी. तो ऐसा लिखा तो नहीं आएगा greenfield, brownfield, but ऐसा आएगा under this existing PSUs will also be upgraded. इस तरीके का कुछ आएगा. मतलब वो क्या हो गया? ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट हो गया. इन्वेस्टमेंट इंडिया ग्रिड जो इसी के अंडर बना हुआ है. NIP is hosted on the Investment India Grid platform and provides opportunities for states, union territories and ministries to collate all major infrastructure projects at a single location. Project monitoring group, it's like a single window kind of thing. Project monitoring group, it ensures fast tracking of approvals, clearances for projects with an anticipated investment of 500 crore and above. National monetization pipeline, this is with respect to brownfield mostly, right? कि upgrade करना है हमको, monetize करके. ये India's disinvestment policy, एक line लिख लो. The NMP is part of the overall disinvestment program. The NMP is part of the overall disinvestment program and is in tune with Prime Minister's PM's call of minimum government, obviously, and maximum governance. देखो, the estimate aggregate monetization potential under NMP is 6 lakh crore through core assets of central government over a 4-year period from 20 to 25. The process of monetization entails a limited period license lease of an asset owned by the government or a public authority. अच्छा देखो, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ होगा क्या इसमें. जैसे कि समझ लो गवर्नमेंट की कोई फैक्ट्री है, कोई PSU है,
वो अभी सिक पड़ी हुई है, तो नेशनल मोनेटाइजेशन स्कीम के अंडर कोई प्राइवेट प्लेयर उसको ऑक्यूपाई कर सकता है, मतलब पैसा देंगे, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट होगा, थोड़ा सा शेयर इक्विटी मिलेगा प्राइवेट प्लेयर को, समझ लो 30% इक्विटी मिल गई, और एक ऑपरेशनल पीरियड मिलेगा। वो ऑपरेशनल पीरियड हो सकता है 30 इयर्स का, उसमें जो भी रेवेन्यू आप कलेक्ट कर लोगे उस फैक्ट्री से या उस प्रोडक्शन यूनिट से, उसका भी कुछ 10 to 15% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इट मींस रेवेन्यू शेयरिंग भी है, इक्विटी डाइल्यूशन भी है इसमें, लिख लो तो it has it has equity dilution, revenue sharing, and upfront fee. मतलब ऑब्वियसली जब प्रोजेक्ट आपको लेना है तो एक फी तो भरनी पड़ेगी ना, एग्जाम देने के लिए फी भरना पड़ता है, तो प्रोजेक्ट लेने के लिए क्यों नहीं करना पड़ेगा? So look here, the process of monetization entails a limited period license, lease of an asset, अब ये समझ में आ रहा है, owned by the government or a public authority to a private entity for upfront or periodic consideration. Such license, lease of an asset include provisions for the transfer of assets back to the authority at the end of the contract period. मतलब वो वाला सुना है आपने मॉडल, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, तो यहां पे कुछ फ्रेश नहीं बिल्ड कर रहे हो आप, ऑलरेडी समथिंग बिल्ड है, so it's like upgrade, improve, operate, transfer. लिखो upgrade, improve, operate, share, transfer. अब ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है इन्वेस्टमेंट मॉडल, ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग होता है। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, logistics costs in India have been in the range of 14 to 18% of GDP against the global benchmark of 8%. मतलब हमारी logistic costs सोचो कितने ज्यादा हैं। NLP seeks to provide a technologically enabled, integrated, cost-efficient, resilient, sustainable, and trusted logistics ecosystem. जो भी अच्छा है, सब कुछ इसमें है, in the country for accelerated and inclusive growth. The policy is an endeavor to improve the competitiveness of Indian goods, enhance economic growth, and increase employment opportunity. अब देखो क्वेश्चन कैसा आ सकता है, the national logistics policy will ensure competitiveness of Indian goods, economic growth, fall in unemployment levels, fall in inflation. बताओ क्या क्या होगा आंसर? ऑल। ठीक है, इन्फ्लेशन भी नीचे जाएगा ना लॉजिस्टिक्स इंप्रूवमेंट से। व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द इन्फ्लेशन दैट इंडिया फेस इज स्ट्रक्चरल कॉस्ट पुशर। ठीक है, लुक हियर, it is aimed at bringing global standards to warehousing, multimodal digital integration, ease of logistics services, human resources, and skill development. The policy will be implemented through a comprehensive logistics action plan, or CLAP. So recently CLAP was in news. It relates to infrastructure development. Got it? Logistic ease across different states, leads index. It is based on World Bank's Logistics Performance Index methodology. It is released by Ministry of Commerce. It has adopted a classification based grading. मतलब इसमें 3 कैटेगरी की गई है, एक अचीवर्स की, दूसरी फास्ट मूवर्स की, और तीसरा जो है एस्पायरर्स की। अब देखो ये कितने अच्छे टर्म्स हैं। पहले टर्म्स यूज होते थे, आपको पता है, बीमारू स्टेट्स, this kind of terminology was used. It was actually demeaning the people of those states. You understand that? But अच्छे terms थोड़े use करो, जैसे कि achievers, fast movers, aspirers, because the world is all about motivation. Do you know? Your success is 10% your ability and 90% your confidence. And confidence comes with proper guidance and motivation. You need motivation. Self belief आना चाहिए ना, कितना भी पढ़ लो। बहुत सारे लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि ज्यादा तैयारी नहीं करते उतना, लेकिन फिर भी उनका हो जाता है सिलेक्शन। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत तैयारी करते, दिन भर पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो चल ही रहे उनके, मतलब 1 साल से 2 साल से 3 साल से गाड़ी चलती ही जा रही है। वाई? बिकॉज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट व्हाट यू आर डूइंग, मतलब ए मार्क तो कर दिया, लेकिन अब OMR में उसको सर्कल करने में हाथ कांप रहे हैं, क्या पता ए नहीं बी है। इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा तो फिर तो मुश्किल है ना। सो लुक हियर, क्या स्टेट्स का क्या हाल है देख लेते हैं इसमें हम एक बार। अचीवर्स, फास्ट मूवर्स, एस्पायरर्स। अचीवर्स कौन है? अचीव्ड अ परसेंटेज स्कोर ऑफ 90% और मोर।
फास्ट मूवर्स वो हैं जो 80 से 90 के बीच में हैं, और एस्पायरर्स हैं जो 80 से बिलो हैं। अब कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो अचीवर्स कौन कौन से देखो, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब एंड उत्तराखंड। नाउ उत्तर प्रदेश इज अ बिग जंप, डू यू अंडरस्टैंड दैट, फ्रॉम एस्पायरर्स टू अचीवर्स इंफ्रास्ट्रक्चर में। केरला, सिक्किम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, पुडुचेरी, राजस्थान, नागालैंड, गोवा, बिहार, छत्तीसगढ़, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, मिजोरम, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख एंड लक्षद्वीप आर इन एस्पायरर्स कैटेगरी। डू यू अंडरस्टैंड दैट? पीएम गति शक्ति, PM Gati Shakti National Master Plan 2021 entails creation of a common umbrella platform with all infrastructure projects pertaining to various ministries. देखो 17 मिनिस्ट्रीज हैं वो जो भी प्लान कर रही हैं, जिसमें रोड, रेलवे, सारी चीजें हैं, कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे गति शक्ति के थ्रू। ठीक है अंदर, वरना क्या होता था कि रेलवे मिनिस्ट्री अपना काम कर रही है, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री अपना काम कर रही है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री अपना काम कर रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री अपना काम कर रही है, तो इनके बीच में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं था। तो वो सिंक्रोनाइजेशन लाने के लिए पीएम गति शक्ति और इसे कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम बनेगा, ठीक है, विच विल गिव अ फिलिप टू इकोनॉमिक ग्रोथ। द प्रोजेक्ट्स पर्टेनिंग टू 7 इंजिन्स क्या है, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। लॉजिस्टिक में वेयर हाउसिंग वगैरह ये सब कुछ आ जाता है। इन द एनआईपी विल बी असाइन्ड विद पीएम, अलाइंड विद पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क। द फोकस इज ऑन इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड सिंक्रोनाइज्ड इंप्लीमेंटेशन। ये बस बात आप याद रखना, अक्रॉस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट विद इनोवेटिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी तो 17 मिनिस्ट्री है, लेकिन हो सकता है 1-2 और जोड़ दिए जाएं, तो नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड सिंक्रोनाइज्ड implementation, and it is with respect to infrastructure gati shakti. A GIS based and data driven decision support platform called PM gati shakti National Master Plan has been also introduced. And obviously this is being conducted in under the watch of Niti Aayog. ठीक है। Developments in physical infrastructure sector, तो road transport में देख लो आप, it acts as the major mode of transportation and connectivity for the country's diverse population of consumers and businesses. road transport की सबसे अच्छी बात है that it gives last mile connectivity, ठीक है, जैसे कैब आपके घर के सामने आके रुकती है, ट्रेन नहीं, ठीक है, शिप और दूर। So 10,457 kilometers of national highways roads were constructed in financial year 22 as compared to 6,000, मतलब जंप हुआ है नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन में। रेलवे में अगर देखोगे, इट्स इंडियाज लाइफलाइन एंड अ ह्यूज रोल टू प्ले इन नेशनल इंटीग्रेशन एंड रीजनल डेवलपमेंट। इट इज द 4th लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड अंडर सिंगल मैनेजमेंट। व्हिच आर द फर्स्ट 3? रशिया तो है ही है, चाइना होगा, ठीक है, और यूके और फ्रांस और जर्मनी। चलो रिसर्च कर लेना, ठीक है, या हो सकता है इन तीनों में नहीं है कोई, भी देख लेना, ठीक है। सिविल एविएशन, फाइनेंशियल ईयर 22 सॉ रिकवरी इन एविएशन सेक्टर मेनली लेड बाय डोमेस्टिक सेक्टर। उड़े देश का आम नागरिक, अच्छा उड़े देश का आम नागरिक इज फॉर टियर 2 टियर 3 सिटीज मोस्टली, क्योंकि टियर 1 में तो है ही सारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। प्रोमोटिंग कनेक्टिविटी टू अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स। The government has also accorded in principle approval of 21 greenfield airports across the country। और अगर ये एयरपोर्ट बन गए तो आपको पता है कि सर्विस सेक्टर को बहुत बड़ा फिलिप मिलेगा। बिकॉज देखो सर्विसेज के कैसे हो सकते हैं, एक्सपोर्ट्स मार्केट कैसे हो सकते हैं सर्विस का। एक तो ये है कि सपोज यू गोइंग टू अ डॉक्टर एंड टेकिंग मेडिकल सर्विसेज एंड पेइंग फॉर इट, द अदर इज द डॉक्टर कमिंग टू यू। डू यू अंडरस्टैंड दैट? बिकॉज सर्विस सेक्टर इज ड्रिवन बाय वर्किंग प्रोफेशनल्स and working professionals need traveling. Time is resource today and air travel is the fastest form of travel till date. तो इसलिए अगर ये 21 greenfield airports बन गए, then obviously you can understand domestic overall flights per month they will increase and that will give a fillip to the entire sector and it will also have spillover effects because अगर एयरपोर्ट डेवलप होता है तो आपको पता है उसके आसपास रेसिडेंस और कमर्शियल एक्टिविटीज वो भी ऊपर आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होता है। पोर्ट बना दो, सबसे अच्छा है ये तो कि अगर आपने पोर्ट बना दिया तो वो जगह एकदम हिट हो जाएगी, या रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट, कुछ नहीं तो एक बस स्टॉप भी बना दो। आपने देखा है कोई गांव में भी होगा जहां बस आके रुकती होगी, वही हब हो जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। पोर्ट्स, the most of the international trade is handled through ports, around 90% of international trade cargo by volume and 79.9% by value. The capacity of major ports increased from 871.5 million tons per annum to 1534.9 MTPA
inland water transport. The total navigable length of waterways in India is around 14,850 kilometers. Cargo movement achieved an all-time high of 108.8 million tons during financial year 22, recording 30.1% growth compared to financial year 21. और आप ये सोच सकते हो कि ये पूरा जो है ये 3 पैराग्राफ पढ़ के समझ में आता है कि ये एक चीज हुई है, क्योंकि उससे पहले सिर्फ बातें हैं जिसका कोई मतलब नहीं है. So that's why only read this. Don't waste your time in going to the survey and reading it again, because it will not be useful, at least for these chapters. For first 2 chapters, I will suggest read the survey also. Under the National Waterways Act 2016-106, new waterways have been declared as national waterways, NWs, taking the total number of national waterways in the country to 111. Indian Vessels Bill. It replaced the Indian Vessels Act 1917. It aims to bring uniformity in the application of law relating to inland waterways and navigation within the country. मतलब चाहे बोट लेकर जाओ, फेरी लेकर जाओ, कुछ भी लो, क्रूज लेकर जाओ, सबके लिए सेम वेसल्स एक्ट है. अच्छा, वाटर वे का जो इनलैंड वाटर वे है उसका नेविगेबल लेंथ सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में? ज्योग्राफी में इसका आंसर है, इकोनॉमी में नहीं. विल इट बी टुवर्ड्स वेस्ट और टुवर्ड्स ईस्ट? ईस्ट. ईस्ट की तरफ होगा ना. कहां होगा? वेस्ट बंगाल. देखो कितना ज्यादा है, समझ में आ रहा है? नेविगेबल लेंथ ऑफ वाटरवेज इन डिफरेंट स्टेट्स. ऑब्वियसली आप देखो वेस्ट बंगाल, असम या साउथ की तरफ केरला, उड़ीसा, फिर ईस्ट कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, दिख रहा है? कोस्टल एरिया होगा या तो फिर, क्योंकि सारी नदियां वहीं जा रही है ना. इलेक्ट्रिसिटी. द टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी ऑफ यूटिलिटीज एंड कैप्टिव पावर प्लांट्स. याद है मैं बात कर रहा था उस दिन कैप्टिव माइनिंग की, तो अब कैप्टिव पावर प्लांट्स तो एटलीस्ट आ गया. डिमांड ऑफ 1 मेगावाट एंड अबव वाज 482.2 गीगावाट इन मार्च 22, is up by 4.7% from 21. Installed capacity in utilities was 399.5 gigawatts on 31st March 2022, is higher by 4.5% from 2021. Between financial year 22 and 21, the maximum rise in electricity generation was recorded in renewable energy sources for utilities and for captive plants. Initiatives for promoting renewable energy. Now, resources देखते हैं हम. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान PM कुसुम. It aims to provide energy and water security to de-dieselize the farm sector and generate additional income for farmers by producing solar power. तो इसमें जो main question आएगा वो ये आएगा that PM Kusum relates to, right? Say for example, it relates to skill development. ऐसा कुछ आ जाएगा. It relates to innovation. It relates to electricity generation. अब लोगों को लगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तो हो नहीं सकता, इनोवेशन होगा या स्किल डेवलपमेंट, ऐसे फंसते हैं. तो याद रखना है सोलर पावर, सीधी सी बात, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी. सोलर पार्क स्कीम, इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू फैसिलिटेट नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक लैंड, power evacuation facilities, road connectivity, water facility, etc., along with statutory clearances. Hydropower purchase obligation HPO with non-solar renewable purchase obligation RPO has been initiated. Development in digital infrastructure and telecommunications. Telephone subscriber, as of November 22, telephone subscriber base in India is 117 crores. So what is India's total population? Have we surpassed China? Yes, we are now proudly the most populated country in the world. इंटरनेट कनेक्शन अगर आप देखोगे मोर देन, अच्छा टेली डेंसिटी इंडिया में सबसे ज्यादा कहां है? टेली डेंसिटी, इट मींस टेलीफोन पर नंबर ऑफ यूजर्स और पर यूजर नंबर ऑफ टेलीफोन्स, ऐसे भी देख लो. सबसे ज्यादा कहां है बताओ? दिल्ली सबसे ज्यादा, एनसीआर में है, याद रखना, ठीक है. सेकंड इज मुंबई. As of November 2022, अच्छा ये तो हो गया हमारा. 97% of total subscribers are connected wirelessly. 83.7 crore have internet connection as of June. The overall tele density in India stood at 84.8%. It ranged from 54.4% in Bihar to 270.6% in Delhi. Do you understand that? So बिहार में सबसे कम है और दिल्ली में सबसे ज्यादा है. 5G rollout. Indian Telegraph Right of Way Amendment Rules 2022 will facilitate faster and easier deployment of telegraph infrastructure to enable speedy 5G rollout. अब 5G में बजट में तो सर्वे में तो ज्यादा कुछ है नहीं, बट 5G से रिलेटेड जो गवर्नमेंट करेगी अब
वो इंपॉर्टेंट होगा, एंड आई थिंक इट विल बी मोर इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, अपकमिंग मेंस एग्जाम बाय द टाइम, बिकॉज गवर्नमेंट इज वेटिंग फॉर द 5G रोल आउट. Growth story of digital infrastructure. Digital public infrastructure aimed at improving financial literacy, innovation, entrepreneurship, employment generation, and empowering beneficiaries has played a critical role in uplifting the economy. Aadhaar commenced the journey of DPI. Favorable demographics, vast expansion of middle class, and digital behavior patterns are the major growth drivers. By the way, let me tell you one thing. In the West also, people did not adopt the digital payment system as fast as they did in India, क्योंकि वहां पे भी एक थोड़ा सा डर लगा रहता था लोगों को. अच्छा, आपने एक चीज देखा होगा, इन द ओल्डर जनरेशन जस्ट बिफोर यू, उनमें थोड़ा सा एक फोबिया है फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस. आपने देखा होगा, आप में थोड़ा कम है. आगे वाली जो जनरेशन आ रहेगी उसमें और भी कम होगा. वो तो बिल्कुल पैसे वैसे रखना बंद ही कर देंगे. एवरीथिंग वुड बी QR कोड ड्रिवन, राइट, अनलेस कि कोई और भी बड़ी टेक्नोलॉजी आ जाए उससे. तब तक ये देखो ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं. द स्टोरी ऑफ इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. 3 ग्रोथ ड्राइवर हैं: फेवरेबल डेमोग्राफिक्स, मिडिल क्लास एक्सपेंशन, एंड डिजिटल बिहेवियर पैटर्न. नाउ इफ यू आस्क मी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस, आई विल से डिजिटल बिहेवियर पैटर्न. ये जो चेंज हुआ है ना, एक बार बिहेवियर चेंज हो गया तो सब कुछ चेंज हो जाएगा. देखो, बिहेवियर ही है जो सिलेक्शन करवाता है और रुकवाता है. अगर बिहेवियर चेंज हो जाए तो सब कुछ हो जाएगा लाइफ में. टेलीफोन एंड रेडियो फॉर डिजिटल एम्पावरमेंट. टोटल टेलीफोन सब्सक्राइबर बेस इन इंडिया स्टैंड्स एज 117.8 crore with 44.3% of subscriber in rural India. More than 98% of total telephone subscriber are connected wirelessly, मतलब mobile phone. The overall tele density in India stood at 84.8% in March 2022. 200% increase in rural internet subscriptions between 2015 and 2021. And you see, 5G आने के बाद तो और भी rural internet penetration होने वाला है. प्रसार भारती, India's autonomous public service broadcaster, broadcasts in 23 languages, 179 dialects from 479 stations, reaches 92% of area and 99.1% of the total population. By the way, याद रखना, ये सबसे ज्यादा जो रीच है वो ऑल इंडिया रेडियो की है, फॉलोड बाय दूरदर्शन. आज भी, even after the growth of private channels so far, but सबसे ज्यादा रीच जो है वो ऑल इंडिया रेडियो की. उतनी रीच किसी की नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली आपने देखा होगा बॉर्डर्स पे जो वो होते जवान होते हैं वो भी ऑल इंडिया रेडियो सुनते हैं. Now these are some of the schemes related to infrastructure, digital infrastructure, especially My Scheme. ये कुछ नहीं है, it's an e-marketplace for schemes where users can look for suitable schemes based on their eligibility. मतलब एज ग्रुप हो सकता है, एरिया हो सकता है, इनकम ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस. उमंग ऐप नाम सुना होगा आपने. उसमें कुछ नहीं है, जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं उनकी सबकी डिटेल है. पेंशनर्स के लिए, स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए, हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, एम्प्लॉयज, एग्रीकल्चर, सबके लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स वेर मेड लाइव ऑन उमंग अंटिल सितंबर 2022. ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जैसे अमेजोन वाले, फ्लिपकार्ट वाले आपस में सब खरीद बेच सकते हैं अब. ओपन फोर्ज, इट प्रमोट्स यूज ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड शेयरिंग एंड रीयूज ऑफ ई गवर्नेंस रिलेटेड सोर्स कोड. ओपन कोड आपको पता है, मतलब उस कोडिंग को कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है, तो उसे ओपन सोर्स कोड कहते हैं. मतलब आपने वो प्रोग्राम का प्रोटोटाइप आप लेके आगे उसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हो. इससे इंप्रूवमेंट होगा ना. यू डू नॉट हैव टू री इन्वेंट द व्हील एवरी टाइम, बिकॉज बेसिक कोड इज ऑलरेडी रिटन. तो वो गवर्नमेंट ने उसको वो पब्लिक कर दिया है. नेशनल AI पोर्टल to strengthen the AI ecosystem in the country by pulling together and highlighting the latest developments happening in central and state governments, industry, academia, NGOs, and civil society. Bhashini. Now this is important for Indian language. National Language Translation Mission, aiming at nurturing Indian language technologies and solution as a public good, was launched in July 2022. So recently Bhashini was in news. तो भाषा से related है, ये समझ जाना. Open Credit Enable Network, OCEN. It will transform lending and borrowing sector. It will ensure that small borrowers are able to avail themselves of the best terms under which credit is available. Unified Payments Interface, UPI, तो आपको पता ही है. Then Mission Drone Shakti. It means promotion of drones. And what are the applications of drones in different sector? Like say for example, food delivery. Drones can do magic. वेस्ट में तो होने भी लगा है, इंडिया में भी हो रहा है, बैंगलोर में, पुणे में, नोएडा में भी एक जगह पे होता है अब ड्रोन से डिलीवरी. लेट्स सी वर्ल्ड, मतलब
पैन इंडिया लेवल पे कब ये चीज और फैलती है. अकाउंट एग्रीगेटर, दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन वन ऑफ द प्रीवियस क्लासेस, राइट? So that's it. That is it. We are done with the economic survey. So it's 1:20. Actually, let's meet at 2:30. Okay, 2:30. See, because I also have some meetings to take care of. So 2:30 we'll meet. अच्छे से अपना लंच वंच कर लो, थोड़ा आराम कर लो. पर अब जो पढ़ेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, बजट. मतलब आप समझ लो कि अगर 7-8 क्वेश्चंस की बात हो रही है, देखो 7-8 दिन में 7-8 क्वेश्चन, इतना ही तो ना, इतना ही चाहिए. हर क्लास से एक क्वेश्चन आ जाए, बस यही सोच के देखो, खत्म हो गया. तो इतना ही आ जाए तो 7-8 क्वेश्चन अगर हो गए तो समझ लो 5-6 की तो तैयारी हो गई है. वही 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो बजट से हो सकते हैं, ठीक है. अनलेस यूपीएससी कुछ ऐसा कर दे कि इकोनॉमी में 25 क्वेश्चंस आ जाए, फिर अगर ऐसा होगा तो बजट से भी 5-6 आ जाएंगे, इकोनॉमिक सर्वे से भी 5-7-8 आ जाएंगे, और बाकी न्यूज़पेपर और योर बेसिक्स. क्लियर? बट देखो, इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको नहीं लगता कि अगर एक बार समझ जाओ तो ज्यादा मुश्किल नहीं है? इट्स नॉट सो प्रॉब्लमैटिक, राइट? इट्स नॉट लाइक से हिस्ट्री where you have to remember so many things, or polity where also you have to remember a lot of things. 3 months था, 6 months था, 60 days था, 40 days था, क्या है, इतने लॉज आते रहते. इकोनॉमी और ज्योग्राफी, ये दो तो ऐसे सब्जेक्ट है कि एक बार पढ़ लो तो बिल्कुल डन है आपका, क्योंकि इसमें सारा लॉजिक है, कहीं पे भी कुछ याद रखने वाला नहीं है, ठीक है. दैट हाउ साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड इज ऑल लॉजिक, देयर इज नथिंग लाइक कि ये, हाँ अब उसके अराउंड कोई साइक्लोन का पर्टिकुलर नाम है तो वो तो आपको याद रखना पड़ेगा. हाँ, ये देखो, ये कंप्लेन तो हमेशा रहेगी कुछ लोगों को. अभी एक यूपीएससी रिफॉर्म्स की भी कुछ बात हो रही है, तो अगर ऐसा एक सबसे बड़ा रिफॉर्म जिसकी बात चल रही है, दैट दे विल रिड्यूस द साइकिल ऑफ एग्जामिनेशन टाइम पीरियड 1.5 ईयर्स से 6 मंथ्स कर देंगे. So it would be great if that can be done, because it has a demoralizing impact on those who do not clear the personality stage. They have to wait again for 1.5 years. तो अगर 6 months होता है तो अच्छा है. और एक और भी बात हो रही है, अब पता नहीं ये होगा कि नहीं. जैसे आपने देखा होगा जीमैट वगैरह होता है या कैट होता है, उसमें एक बार आप निकालो तो वो सर्टिफिकेट वैलिड रहता है कुछ दिनों तक. वैसे बात हो रही है, अभी देखो इस पे ज़्यादा खुश मत होना कि अगर आपका प्री निकल गया तो हो सकता है 2 बार आप मेंस दे सकते हो. ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब अब लेकिन सोच के देखो प्री का लेवल क्या होगा फिर, ठीक है. बट ये सब अभी बिल्कुल बैक बर्नर पे है. वैसे एक रिफॉर्म तो एज रिडक्शन, अटेम्प्ट रिडक्शन का भी है, बट दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. डू नॉट लेंड एन ईयर टू एनीबडी हु इज स्पीकिंग अबाउट एज रिडक्शन, अटेम्प्ट रिडक्शन. वो सिर्फ आपको डराते हैं, ठीक है. ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और अगर ऐसा होता भी है तो दैट विल ऑलवेज बी विद अ 3-year कूलिंग पीरियड. तो जैसे अगर कुछ भी ऐसा इंप्लीमेंट हो तो 2025 के बाद इंप्लीमेंट होगा, ठीक है. उससे पहले तक जो भी लोग हैं जिस भी एज ब्रैकेट में, सबको मिलेगा चांस. तो 3 साल तो बहुत होते हैं ना. 3 साल में 3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो फिर तो वैसे भी छोड़ देना चाहिए. थैंक यू.